So let's start. Last class we went through कि यार FCOM को पढ़ना कैसे. That's what we studied basically. Today is ideally the first class. Today is ideally the first class of your entire studies. Okay. Welcome to the first class and let's start here. Let's start. How many manuals do we have under the A320? Firstly, what is the A320? It's just one aircraft or is it a family of aircrafts? It is a family of aircrafts. Family of aircraft. Okay. Why do we call it the family of aircrafts? Because we have different variations. So, सबसे पहले A320 बना. Then what they did was they shrunk the fuselage's length, which is 319. They shrunk it further, that's 318. 320 को अगर आप लेन कर दोगे तो वो बन जाते हैं 321. All of these, as soon as you do your type rating, and after you do a course known as the differences course, you will be able to fly the other aircrafts as well. Clear? Other than that, the same aircraft can be flown with a number of engines. How many engines do we have? We have 4 different engines: IAE engines, CFM engines, LEAP engines, Pratt and Whitney engines. Also, sometimes you also get Rolls-Royce engines. Those are really expensive. So maybe you know the corporate Airbus corporate jets or the Airbus business jets. उसमें वो use होता है. How many manuals do we have? We have the AFM, the airplane flight manual, which is similar to your POF or your AFM in your smaller aircrafts. Based on the AFM, we have something known as the FCOM, which is made, and then we have something known as the FCTM, which is based on the FCOM. Let's say if something is written on the FCOM and there's something written in the FCTM, कौन सुपरसीड करेगा? FCOM सुपरसीड करेगा. अगर AFM में कुछ लिखा है, FCOM में कुछ लिखा है सिमिलर चीज, और अगर दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी है, who supersedes whom? AFM supersedes FCOM. Now we have 2 more manuals. In fact, we have a lot more manuals for this aircraft. We have the QRH. What is the QRH and what does it contain? The QRH basically contains all the checklists. Point number 1. This is something that you use in your everyday flying. Apart from that, it also contains some other checklists which are not a part of your ECAM, which are not a part of your faults which show up in your aircraft. For example, engine tailpipe fire. A tailpipe fire is not detected by the engine. A ground personnel reports at tail. How do you take care of it? What procedure do you use? That particular procedure is mentioned in your QRH. Okay, that particular procedure is mentioned in your QRH. Many a times when you're taxing or when you're just before departure, you get a fault. Maybe you're in flight and you get a fault. Then, in that case, you have a procedure to reset that fault, to reset that system. Where is that procedure written? It's there in the QRH. Across all the different aircrafts, you can have certain functions in an aircraft, you cannot have the same functions in the other aircrafts. For example, you can go around, not there is a way by which you can go around without the maximum thrust to save the engine life. Some aircrafts have that particular function, some aircrafts don't. That function is known as the soft go around function. You do not need to apply toga thrust for the aircraft to go around or go into the go around phase. You can go around with a lesser amount of thrust. So that is known as the soft go around function of the aircraft. So where are these differences between aircrafts noted down? QRH. So abnormal procedures, abnormal checklists, normal checklists. Only a few abnormal checklists and not all of them. System resets, aircraft configuration summaries. All of these things are in the QRH. To some extent, some other information such as the green dot speed table, the hydraulic architecture and the flight control architecture is also a part of the QRH. OEBs stand for Operations Engineering Bulletin. क्या है ये? Operations Engineering Bulletin क्या होती है? कोई भी फॉल्ट आता है ना, एयरबस इतना मॉडर्न जहाज है, एयरबस हैज समथिंग नोन एज एन ECAM, इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटरिंग. तो इलेक्ट्रॉनिकली इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर पूरे एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को मॉनिटर करता है. अगर कोई भी फॉल्ट आता है आपके डिस्प्ले पे दिखता है.
एंड वो आपको प्रोसीजर भी बता देगा कि मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. Easy. That's how beautiful this aircraft is. Now, having said that, sometimes there are temporary faults or problems that come up in aircrafts in which you are not supposed to follow that procedure. There has to be a way, or there has to be a note where certain procedures are not supposed to be followed, because हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आया उसकी वजह से कुछ फॉल्टी इंडिकेशन आ रही, कुछ फॉल्टी प्रोसीजर शो कर रहा है. In such cases, you can have another set of procedure which overrides the ECAM procedure, the procedure which is displayed on the screen to you. Those particular procedures are known as operations engineering bulletins. Operations engineering bulletin. Okay, so before you do your before you do your ECAM, before you do your procedures that are mentioned in the ECAM, you're supposed to check, are there any OEBs for this particular ECAM? Are there any memory items? That is what OEBs are for. Clear? What are other documents? We have six under document 6, 7, 8, and we have the minimum equipment list, the master minimum equipment list, and we also have the CDL, the configuration deviation list. Or what are these items? These are three lists. Now you've done your CPL. Do you know what an MEL is? I only know the full form minimum equipment list. Are you aware कि उसका concept क्या है? नहीं. Okay, minimum equipment list is a list of all of those items which are allowed to be inoperative in a flight. Many people say कि यार minimum equipment list है कि यार ये item होना चाहिए. ये सारे आइटम्स की लिस्ट है कि all these items should be there. All these items should be there. No, that's not true. That's not true. It is not. It is not a list of items that should be there. It is a list of items which are allowed to be inoperative. Okay. Like what? For example, pack 1, air conditioning pack 1. Yeah, bleed air from engine 1. Engineer comes and tells you, sir, engine 1 bleed air is inoperative. Can you go or not? So, as a captain, what will you do? You're gonna look up engine 1 bleed air in your minimum equipment list. If you find engine 1 bleed in your minimum equipment list, what is your thought? Then I will no go, not go. It's a go. यही तो सिखाना It's a है. go. It's a go. It is a list of items which are allowed to be inoperative. Got it? It is a list of items which is allowed to be inoperative. अगर वो लिस्ट में है तो मैं उसके बिना भी जा सकता हूँ. अंडरस्टूड? MEL में आपको रडर नहीं मिलेगा. सर रडर खराब है. MEL देखोगे रडर नहीं मिलेगा. MEL में है ही नहीं, मैं जा ही नहीं सकता. For an item to be inoperative and for you to go, it has to be in the MEL. Clear? Clear. And what does MMEL means? Coming to that. Okay. So there are two minimum equipment lists. One is MMEL, which is the master minimum equipment list, and then other one is the MEL. Master minimum equipment list is as we know, it's a master. It's made by the manufacturer. The MEL is made by the operator. What is the difference between manufacturer and operator? Manufacturer is Airbus. Operator can be many. It can be Indigo. It can be Air India. It can be Air India Express. Anyone. कोई डाउट? पक्का? Okay. So we have MMEL by the Airbus and MEL by the operator. Easy? Easy? One second.
So mmel is a very big document because Airbus is like, bro, तुम इतनी सारी चीजें, you can have this big of a list. MEL is a very big list. Airbus is like, you can operate it without this also. इसके बिना भी ऑपरेट कर सकते, 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 इसके बिना भी ऑपरेट कर सकते. अब एयर इंडिया आएगा, बोलेगा भाई तूने ये वाला भी बोल रहा है कि तू इसके बिना भी ऑपरेट कर सकता है. नहीं भाई, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, मैं इतना रिस्क नहीं ले रहा, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए. तो वो क्या करेगा, वो ये लिस्ट से इसको हटा देगा. भाई तू इसके बिना भी जहाज भेज दे रहा है, नहीं 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 नहीं, नॉट अलाउड, इसको भी हटा देगा. सो अगर तुम्हारी एमएमईएल इतनी है, तुम्हारी एमईएल उसमें से जो जो आइटम्स काट छाट करके उससे एक छोटी डॉक्यूमेंट बनेगी. एयरबस अलाउज दिस मेनी आइटम्स टू बी इनऑपरेटिव, इसीलिए उसकी एमएमईएल बढ़ी है. वी एज एन ऑपरेटर वी ओनली अलाउ दिस मेनी आइटम्स टू बी इनऑपरेटिव. इट्स अ मोर रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट. Okay, it is a more conservative document than the MMEL, based on operators SOPs and that particular country's regulations. Clear? Now, just like MEL is for equipments, functions and systems, CDL is for structural elements. Structural elements like एक पैनल में डेंट आया हुआ है, लैंडिंग गियर का एक डोर टूटा हुआ है, स्लैट में एक थोड़ा डेंट है, स्टैटिक डिस्चार्जर मिसिंग है, रिफ्यूलिंग पैनल लूज है, रिफ्यूलिंग होज गायब है. तो ये सारी चीजें सीडीएल में आती हैं, ये सारी चीजें सीडीएल में आती हैं. कैन यू गो विदाउट अ रिफ्यूलिंग कैप? यस. हाउ भाई, कैसे जा सकते क्योंकि हैं? वो कैप है सिर्फ, उसके नीचे और दो तीन ऐसे वाल्व्स रहते हैं रिफ्यूलिंग. आप तो वो ड्रैग नहीं देगी हाँ अगर देगी, कुछ है नहीं तो? देगी, उसकी फ्यूल पेनल्टी लगेगी. सो नॉट ओनली, गुड क्वेश्चन, तो उसकी फ्यूल ज्यादा नहीं खाएगी? हाँ भाई, फ्यूल ज्यादा खाएगी, ड्रैग आएगा ज्यादा. So when something is not available in your aircraft, it not only tells you whether you can go or not, but it also tells you what procedure to follow, what operational considerations do you have to make. It also tells you what flight limitations do you have because of that particular fault. Many a times, let's say for example, can you go without speed brakes? Yes, you can go without speed brakes, but in that case your maximum flight level is flight level 330. सो जब आप यहाँ पे वो आइटम देखते हो या फिर वो पर्टिकुलर पैनल या कैप वॉट एवर, वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं, तो इट ऑल्सो टेल्स यू वॉट पर्टिकुलर प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो इफ यू आर गोइंग विदाउट दैट थिंग. गॉट इट? नो डाउट्स? ओके, पक्का? ओके ग्रेट. एफ कॉम पे आ जाते हैं. We will go through OEBs, MMEL, all of that later. Okay, we will go through all of it later. Let's start with FCOM. I believe you have completed the first through your CBTs that are provided by you, right? Great. Now let's start with FCOM. As briefed you, हम लोग हैं किस में? हम लोग DSC में, systems में, system descriptions में. The first chapter that we are going to study is ATA-20, that is aircraft general. What is the first line which is written in your aircraft? A320 is a subsonic medium range civil transport aircraft, right? What do you mean by subsonic? Lesser than the speed of sound. What is the maximum speed at which you can go? What is the maximum speed of sound that you can like what is the maximum Mach number that you can fly? 0.85, I guess. 0.82. This is your 82. limitation in your FCO. Okay, ये आपके Okay. limitation section में आएगा. It is a medium range civil transport aircraft. Medium range means इसकी range कितनी है? Maximum 4,700 nautical miles. This is for A321 XLR. Okay. Okay. No doubts?
नो, अच्छा ये हर किसी की अलग होगी, नियो इंजन की अलग होगी, नियो की सी एफ थोड़ी एम अलग होती है, उसकी अराउंड सी एफ एम की 10% के अलग आसपास, and- ऐसा कुछ ज़्यादा ही होती है। अपार्ट फ्रॉम हम्म। दैट, एक्सएलआर में क्या होता है, फ्यूल टैंक्स ज़्यादा होते हैं, यू हैव एडिशनल फ्यूल टैंक्स। सो बिकॉज यू हैव एडिशनल फ्यूल टैंक्स, तुम्हारी रेंज बढ़ जाती है। हम्म। ठीक है, अगर वो एडिशनल सेंटर टैंक्स या एडिशनल फ्यूल टैंक्स नहीं रहेंगे तो ये रेंज कम होती जाएगी, 1 घंटे की रेंज कम होती जाएगी, अराउंड 500 500 500 से गिरते जाता है। ठीक है। ठीक है। एंड इट्स अ सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नॉट टू बी, इट इज नॉट डिजाइन फॉर मिलिट्री यूज। क्लियर? अच्छा, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट, ओके। primarily to be used for the transportation. Okay. Okay, it's a twin engine aircraft. It's a twin engine aircraft. Both the engines are high bypass ratio engines. What do you mean by high bypass ratio? uh, they take more air and throws it backward. So here you have the fan. Okay, here you have the fan. This is the Hmm. low pressure compressor. This is the Low pressure low compressor. pressure compressor. This is the high pressure compressor. This is the combustion chamber, turbine, turbine. Correct. This entire section is known as the core of the engine, and this is known as the bypass airflow. Not all of the airflow goes through the core of the engine. Okay. Majority Hmm. thrust is created by the bypass airflow. Around 80% of the thrust is created by the bypass airflow. The rest 20% is created by the jet exhaust of the core of the engine. Okay. Now the ratio of the air that is bypassing this, that is maybe 4 units of air in comparison to the 1 unit which is going inside. So in this case, what is the bypass ratio? 4 is to 1. Because 4 air is being bypassed for every 1 unit that is going into the core. Core. Okay, so it's a high bypass ratio engine. That is what a bypass ratio, and this is the ratio of the masses of the air, not of the volume of the air. So it's 4 kgs of air, not 4 liters of air. Okay, it's a turbo fan engine. You know that there are three types of jet engines: turbo shaft, turbo jet, turbo fan. You know the differences between the three? और एक बार टर्बो शाफ्ट वाला बताना, शायद ये एटीआर में यूज होता है टर्बो शाफ्ट। नहीं, उसमें टर्बो prop यूज होता है। टर्बो prop. Okay. Turbojet is used in fighter jets. Yes, so turbojet, you only have the core. All the air is going through the core of the engine. Low Hmm. pressure compressor, high pressure compressor, combustion chamber, turbine, turbine. दिस इज द टर्बोजेट। अब ये लो प्रेशर कंप्रेसर के सामने अगर मैं एक बड़ा सा फैन लगा दूं या प्रोपेलर लगा दूं तो इट विल बिकम अ टर्बो फैन इंजन और अ टर्बो prop इंजन। व्हाट इज अ टर्बो शाफ्ट इंजन? अ टर्बो शाफ्ट इंजन इज बेसिकली द एपीयू। इट्स द एपीयू। व्हाई इज इट नोन एज अ टर्बो शाफ्ट? बिकॉज आपका पास एक कंप्रेसर है, ये आपका कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। उसके बाद ये आपका कंबशन चेंबर है, ये आपका टर्बाइन है। अब ये टर्बाइन, फर्स्ट स्टेज टर्बाइन इज ड्राइविंग द कंप्रेसर, तो चलो गुड। बट और भी हमारे पास हवा है, और भी हमारे पास हवा है। ये हवा कहाँ जा रही है? इट्स अगेन गोइंग टू अनदर टर्बाइन। It's again going to another turbine. This turbine is not connected to any shaft. हवा आई, कंप्रेसर में कंप्रेस हुई, कंबशन चेंबर में कंबस्ट हुई, टर्बाइन में फ्लो की, थोड़ी एनर्जी लूज करके वापस उसने कंप्रेसर को चला दिया। गुड। अभी भी हमारे पास हॉट एयर है, ये हॉट एयर Hmm. जाएगी एक और टर्बाइन में। दिस एक्स्ट्रा टर्बाइन इज नोन एज द फ्री पावर टर्बाइन। It's known as the free power turbine because it is free of the engine. This free turbine drives a shaft, and this shaft can drive a number of accessories like another compressor which will give you bleed air. It can also drive a hydraulic pump, it can also drive an IDG, it can also drive an oil pump, and number of other things.
This kind of an engine is known as a turbo shaft engine. It's primarily in use in your modern day aircraft as the AP. Okay. Clear? In case you have any doubts, you can always look up Oxford. And they are mounted under the wing. What is the benefit of mounting an engine under the wing? If you're mounting an engine under the wing, you can always feed fuel into the engines with the help of gravity, which is also possible on the A320 aircrafts. Okay. How is it? How is an aircraft? How is an engine mounted on the wing of the aircraft? Let's say this is the wing. Okay. We have this particular structure. This structure is known as the pylon. This particular structure is known as the pylon. Just ahead of the pylon, we have the housing of the engine. This is known as the nacelle of the engine. Inside the nacelle of the engine, you have the fan. Clear? No doubts? Okay, great. Now, I understand that when you read the FCOM, there are a number of variations, there are a number of models, there are a number of MSNs, and we have a lot of variations between them. In order to simplify things for you, I have made this particular chart. We are going to study this chart now. This will highlight the differences between a A320 CO and an A320 Neo. Okay, so what is an A320 CO? An A320 CO, CEO stands for current engine option, Neo stands for new engine option. Earlier we had old engines which are known as the current engine option. उनका bypass ratio थोड़ा कम हुआ करता था. उसके बाद आए हमारे पास Neos which are now more fuel efficient owing to the bigger diameter of the fan and greater bypass airflow. They have reduced fuel consumption by a very good amount. Earlier the fuel consumption per hour used to be like 2200 to 2400 per kgs per hour. Now, with the help of new engine, it has gone down to 1800 kgs per hour. You can calculate it's a good 20 to 25% reduction. Okay, so fuel costs have gone down. Any doubts? One second. Okay, now current engine option and new engine option. The very first type of engine that was created was the IAE V2500. IAE stands for International Aero Engines. Okay. V2500 was the model name. V is just a model name. 2500 means it actually delivers एक और zero लगा दो, it delivered this many pounds of thrust. That is why it was called V2500. ठीक है. CFM is another company. इसकी कंपनी का जो इंजन है that's known as CFM 56 Bravo. Okay, it's called CFM 56 Bravo. उसकी भी सीरीज आती है 400 सीरीज आती है 600 CFM56B6 CFM56B4 वो उसकी सब कैटेगरीज है अगेन not a part of our syllabus even when you study for airlines and your exam. Okay, the bypass ratio of both of these actually depends on the submodels, but if you want to give you an approximate figure, that approximate figure would somewhere lie between 4.5 to 5.4 is to 1 is to 1 4.5 is to 1 से लेके 5.4 is to 1. You can actually look up Wikipedia, you can actually look up IAE's website and you can search that particular model number and they will give you the bypass ratio for that exact sub model also, but it lies between this range. Okay, if you have to give an average, it would be 5 is to 1. For this it will be 5.5 is to 1. CFM engines again have a larger diameter, as you know, as your bypass ratio keeps on going higher and higher. The diameter of the fan also increases. Here the diameter
Here the bypass ratio is 5.6 is to 1 or 6.0 is to 1 depending from model to model. A higher model will have a higher bypass ratio, of course. Okay. Now when you're reading the FCOM or जब आप FCOM के preliminary pages में aircraft allocation table में गए थे, which I showed you in the last class, aircraft allocation table, which is there visible in the only in the paper only FCOMs. In that case, the registration is written, the MSN is written, and on the right hand side you have the model of the aircraft written, where it says A320 112 211, something like this, है ना? And I told you please have a look at the second digit, right? If the second digit is 1, means it's a CFM engine. If the second engine is 3, it's a IAE engine. Clear? Any doubts? So it's like 1, 3, 5, 7, all odd numbers. Huh? Then we have Neos. Neos, we have two brands, the Leap 1 Alpha engines, Leading Edge Aviation Propulsion. Leading Edge Aviation Propulsion, it's a joint venture between two companies. You can look up which two companies. Okay, 1 Alpha, that's the engine model. We also, Leap engines are also incorporated in the new Boeing C737 MAX aircrafts, where it is called 1 Bravo. So 1 Alpha, Alpha is for Airbus, Bravo is for Boeing. We can think of it like that. Other than that, something important is, again, it has a very big diameter, and it has new fan blades. It has of the scimitar type blades now, and it has a really high bypass ratio, a lot of thrust. In fact, 11 is to 1. It's a massive engine. It's a massive engine. They have shrunken the core of the engine. They have also expanded the fan of the engine. Okay. In your MSNs, it will be written as A320-251 followed by a letter N to denote that it's a new aircraft. Likewise for the Pratt & Whitney G1100 engines, these are the engines which are grounded, which had a problem with their planetary gearbox system which is in the fan. So what they did was they kept a reduction gearbox in the fan. So you have a frontal fan, right? जहाँ पे आपके बड़े बड़े फैन ब्लेड्स होते हैं, तो इनका ये जो हब था यहाँ पे व्हाट दे केप्ट समथिंग नोन एज अ रिडक्शन गियर बॉक्स. आपके टेक्नाम्स में भी होता है. अगर आपका मेन शाफ्ट एक्चुअली 2000 आरपीएम पे चल रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेन शाफ्ट मेरा 2000 आरपीएम पे चल रहा है, लेकिन मैं फैन को 1900 आरपीएम पे लगाता हूँ. वाई? बिकॉज देन आई कैन मेक द फैन डायमीटर बिगर. I have a limitation. If I'm rotating the fan really fast, I cannot make the fan big because then the tip will exceed the speed of sound. Right? So what they did was they wanted to slow down the fan. They wanted to slow down the fan. They did that. They achieved it. They achieved a higher bypass ratio, 12 is to 1, which led us to 271. That's the model number. But again, these are grounded because of the same problems in the planetary gearbox. Any doubts? I don't think this will confuse you. The aircraft models will and the numbers will confuse you any further. Apart from that, now we are going to go to the next point, which is flight crew. How many flight crew? Though flight crew is the minimum required to be there on this aircraft. Again, there are aircrafts which have one observer seat. At least there has to be one observer seat, and there are aircrafts which have two observer seats. Any doubts? No doubts, right? No doubts? Great. Now we have dimensions. Let's come to the dimensions of this aircraft. How big is this aircraft actually? See, again, when you read the FCOM, you'll have a number of MSNs, and हर एक का, आपने पढ़ा होगा, खोला भी होगा, तो आप देखोगे यार बहुत सारे डायग्राम्स दिए हैं एंड उसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हैं. सी, primarily what is important for you is length, width, height. ये तीन नंबर्स याद रखो. Okay, so what is the length? What is length? Length is 123 feet
123 means from the nose of the aircraft all the way to the tail of the aircraft. How much is the length? It is 123 feet. Okay. Now, if you stretch the fuselage to make it a 321, you add more 23 feet in the cabin. Some ahead of the wing, some behind the wing, which makes it 123 plus 23, 146. That's for an A321. We're talking about the wingspan of the aircraft. It is 111 feet. Now, this 111 feet is for those wings which have this wingtip fence. You must have seen Airbuses with this wingtip fence, right? This kind of a wingtip fence. So, ये क्या ये विंग ऐसे जाती थी और ऐसे खत्म हो जाती थी क्योंकि ये उसकी फेंस है। लेकिन अभी जो नए शार्कलेट्स आए हैं ये यहाँ पर जाते खत्म नहीं होते, ये यहाँ तक ऐसे जाते हैं। सो वी हैव एडेड सम दिस मच अमाउंट ऑफ अ स्पेस हियर। ओके, तो यहाँ पे करीबन 3 फीट ऐड हुआ है और उस साइड भी करीबन 3 फीट ऐड हुआ है। So aircrafts which have sharklets, what are these called? Winglets is a word which was coined and patented by the Airbus. Sorry, by the Boeing. Winglets was patented by the Boeing. They had the copyright on it. So they were like, okay, we won't call it wingtips here. We'll call it winglets. So yeah, we'll call it sharklets. Understood? No doubts. Height कितनी है? 39 feet. No doubts. Height is same between 319, 20, 21. Height change नहीं की है. ठीक है. Okay. Okay. Let's take a short break. 1 or 2 minutes. Okay. Let's resume. Open your FCOM and again go to pressurized and unpressurized compartments. When you go to pressurized and unpressurized compartments, a direct question gets asked from here. What components or what compartments are pressurized and what components and compartments are unpressurized? See, there are only 3 to 4 things which are pressurized. जहां पर भी आपके पेलोड या हमारे पैसेंजर्स रहेंगे या ह्यूमंस रहेंगे या उनका माल रहेगा, which is humans are there in the cabin, humans are there in the cockpit, and their luggage is in the cargo. Apart from that, the avionics bay, because a human can physically go not in flight, but a human has access to it on ground. ठीक है? Avionics bay. What is the avionics bay? It's a bay which is right below. Let's say if the pilot sits here, the avionics bay is somewhere over here. So it is also pressurized during a flight. Pressurized. So what actually happens? We have a heat exchanger. The entire cockpit panels, they are ventilated with the help of the air conditioning of the cockpit. So that air conditioning air goes here and it goes into your avionics duct. Okay, air from the air conditioning is also entering the avionics duct. It is cooling down the entire avionics system behind you and then it is being thrown outboard. Because the same air conditioning which is there in the cabin, it's going there, we call it a pressurized aircraft. Okay, we call it pressurized. Now, what is unpressurized? The front nose of the aircraft where you have the airborne weather radar, known as the radome. You have the nose landing gear bay. You have the main landing gear bays. The air conditioning bays. The air conditioning bays where the packs, air conditioning packs are kept. Those. And the entire tail cone of your aircraft. So the air conditioning and the pressurization is limited to till the front. This is the front pressure bulkhead, and to the aft you have the aft pressure bulkhead. So the pressurization is limited to these 2 points. Apart from that, the pressurization is there in the cabin. The pressurization is there in the forward cargo. There's a pressurization in the aft cargo and also in the bulk cargo compartment. Okay. Other than that, you also have the avionics bay, which is pressurized. What is unpressurized? Nose
nose wheel, main landing gear and packs, tail cone. Entire aircraft is covered. No doubt. Okay, all right. No doubt. Now let's talk about antennas. Go through the diagram for the antennas which is there. उसमें तो बहुत सारे हैं. हाँ, उसमें बहुत सारे हैं. But we are going to filter and study it, right? हाँ जी, हाँ जी. चैप्टर 21 खोलना है. नहीं, अभी we are still in 20. 20. ओके. Okay, open. हम्म. ओपन. Okay. So now I want you to open and the FCOM and I want you to see the antennas ka diagram. Okay. In that antennas diagram, you need to understand any communication antenna is vertical, any navigation antenna is horizontal. कम्युनिकेशन एंटीना इज वर्टिकल. Always, always. आप सेस्ना देखो. आप सेस्ना में जब फ्लाई करते थे तो आपके कॉम एंटेनास पीछे वर्टिकल रहते थे. आपके नाव एंटेनास हमेशा हॉरिजॉन्टल रहते थे विद वेरिएंट्स. Right? It's a basic thing. Okay. Primarily, the antennas which we actually use in flight are the VHF HF antennas for communication. Now, for the purpose of communication, we have VHF 1, 2, 3. So see, जैसे जैसे आगे से पीछे जा रहे हैं 1, 2, 3. एक ऊपर एक नीचे एक पीछे. वापस ऊपर की तरफ. ओके. ये कैसे दिखते हैं, इनका एक्चुअल शेप कैसा होता है? It's something like this. It's something like this. कोई डाउट? नो. नीचे भी है, ऊपर भी है. अब आते हैं दूसरा एंटेना कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है वो HF1 HF2. सो HF1 HF2 के लिए एंटेना एक ही है which is mounted in the front of the rudder or the vertical stabilizer of your aircraft, but it's not visible, it's inside the fuselage. ओके. ठीक है. जैसे आप जब अपनी गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी एक एंटेना होता था पुरानी वाली गाड़ी में ना, तो वो निकालना पड़ता था अगर आवाज नहीं आ रही, लेकिन जब वो अंदर रहता था तो तभी तो वो एंटेना की तरह काम तो करता ही था ना. सेम थिंग. सो HF1 HF2 द सेम सिंगल एंटेना, उससे आपके दोनों HF रिसीवर 1 और HF रिसीवर 2 दोनों इसी से कनेक्टेड है. दोनों इसी से कनेक्टेड है. इसी से. सो इफ दिस वन फेल्स, सो दोनों ही गए फिर तो. सॉरी, अगर इनमें से एक भी फेल होता है एचएफ का तो दोनों ही गए मतलब. अगर एंटेना गया तो आप रिसीव कर ही नहीं पाओगे. The funda is you have one antenna, you have another receiver, you have another. Receiver क्या होता है? Receiver is the radio. It's the demodulator or the modulator. Right? क्योंकि redundancy चाहिए हमें. अगर एक HF का receiver या transceiver fail किया, I can use the other HF receiver transceiver to transmit through the same antenna. Antenna एक ही है. Okay. The same antenna is being shared among the two transceivers. Apart from that, you have VHF1, VHF2, VHF3. Each of them have their own separate transceivers, which is the VHF1 transceiver, VHF2 transceiver, and the VHF3 transceiver. Easy. That is all about your communication antennas. Coming. Okay. और secondly, हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है. लाइक आई कैन नॉट शफल कि VHF2 को मैं आगे कर दूं, VHF1 को पीछे कर दूं, ऐसे नहीं. आप कैसे करोगे? I did not get your question. मैं कह रहा हूँ जैसे VHF1 की पोजीशन यहाँ है, ऊपर कॉकपिट के ऊपर है, तो मेरे को एग्जैक्ट यही पता होना चाहिए कि VHF1 यहीं पे ही होगा, या आई कैन शफल दिस की VHF1 को मैं बीच में शिफ्ट कर दूं. मतलब इन केस मेरे से कोई डायग्राम बनवाए इंस्ट्रक्टर, तो मुझे पता होना चाहिए कि VHF1 भाई यहीं पे ही है. नहीं, सो आपसे कोई भी डायग्राम बनाने बोलेगा नहीं. अच्छा. Okay. When you start solving questions, no one is going to ask you to know the diagram, because अगर उतना डेप्थ में पढ़ने लगोगे तब तो भाई हो गया. इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है पूरे एफकॉम में, वो समुंदर है यार. तो वो तो होने से रहा. अच्छा, मुझे बस ये बताना चाहिए कि 3 VHF हैं, 2 HF हैं, है ना, 2 GPS है.
दो डीएमई है। ठीक है। हम्म। एंड एक आइडिया होना चाहिए कि यार कहाँ पे फ्यूजलाज के ऊपर और नीचे माउंटेड, एक आगे एक ठीक। पीछे होता है एक बीच में होता है, ये एक आइडिया होना चाहिए। एचएफ का है भाई, रडर पे लगा हुआ है। ओके, नाउ जीपीएस एंटेनास, डू यू थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ कीपिंग जीपीएस एंटेनास नीचे की तरफ? सैटेलाइट्स ऊपर रहेंगे। सो हम्म। जीपीएस एंटेनास 1 and 2 are ऊपर. In your diagram in the FCOM, there will be something known as MMR. In your FCOMs, there will be a diagram, something known as an MMR. Please have a look. उसका एंटेना कहीं यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, इन दो जगहों पे होगा, है ना? हाँ जी हाँ जी, एक वीएचएफ जहाँ पे लिखा है ना आपके, एक इससे आगे एक इसके जस्ट पीछे है। MMR. MMR हाँ। stands for multi-mode receiver. It's a same antenna for ILS and GPS. MMR1 has ILS1 GPS1 and MMR2 has ILS2 GPS2. तो MMR stands for multi-mode receiver. Okay? हम्म। So कुछ कुछ जहाज में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता। ओके, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, इसीलिए वहां पर एक ट्राइंगल दिया रहेगा ऐसा। इस ट्राइंगल का मतलब रहता है इफ इंस्टॉल्ड, if installed. So I'm giving you the information on the FCOM, but this information is only applicable if that particular system is installed in your aircraft. ओके। Easy. हम्म। Now let's come to other navigation antennas. If you want to navigate on the en route segment of your flight, you have a VUR. Again, you have one VUR antenna. हम्म। Again, it has to be a horizontal, so it's mounted on the top of your fin. फॉर नेविगेशन पर्पसेस अगेन वी हैव डीएमई, वीओआर के साथ डीएमई यूज होता है। यहाँ पे आपके पास येलो कलर के ना ऐसे छोटे से ऐसे टाइप के एंटेनास होते हैं, इतने से। यू कैन ऑलवेज गो टू गूगल राइट नाउ एंड यू कैन हैव अ लुक एट डीएमई एंटेनास A320 एंड यू विल सी दीज स्मॉल येलो छोटे छोटे से एंटेनास। डीएमई एंटेनास A320 देख गया। मिल गया है ना? ग्रेट। हाँ जी हाँ जी। वेयर इज इट माउंटेड? एकदम जहाज के नीचे। और ना अगर आप वॉक अराउंड करने जाते हो तो एकदम ऐसे सर पे बजता है। ओ। मेरा सर पे ठुका हुआ, बहुत गंदी लगती है। एंड इट्स पॉइंटेड। Apart from that, you have your, if you're wanting to come and land, you need to use an ILS. ILS antennas कहाँ पे? So in the radome of your aircraft, this is the radome of your aircraft. यहाँ पे आपके पास आपका रहेगा एयरबॉर्न वेदर रडार। इस एयरबॉर्न वेदर रडार के यहाँ पे और यहाँ पे एक एक एंटेनाज रहेंगे। And these are ILS localizer and glide path antennas. ठीक है, you can also again have a look at this from Google. ILS localizer and glide slope antenna A320 अगर आप सर्च करेंगे, ILS localizer and glide slope antenna A320 in radome, inside radome, तो आपको रेडार भी दिख जाएगा, लोकलाइजर एंटेना भी दिख जाएगा, ग्लाइड स्लोप एंटेना भी दिख जाएगा। ये एंटेना किस हिसाब से दिखेंगे आपको? यू विल बी एबल टू सी दिस radome, यू विल बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। एक ऐसे मेटल की ऐसे एक रॉड होगी, हम्म। ये मेटल की जो रॉड है उस साइड भी होगी, ऐसे करके दो हाँ होंगी। जी हाँ जी। ये जो दो एंटेनास है, these are ILS localizer and glide slope antennas. ओके, हाँ जी दिख गई। अगेन वो एक होता है डायग्राम पढ़ना, एक होता है एक्चुअली एंटेना देख लेना। हाँ जी देख लिया। रडोम भी आपने, एयरबोर्न वेदर रडार का भी आपने एंटेना देख लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे पास RA1+2 है। दिस इज रेडियो अल्टीमीटर 1, रेडियो अल्टीमीटर 2। what does it do? It basically sends a wave downwards to the ground, it gets reflected from the ground and यहाँ पे आपके पास रिसीवर रहेगा। सो आपके पास RA1 के लिए यहाँ पे एक एंटेना, यहाँ पे एक एंटेना होगा, फिर RA2 के लिए यहाँ पे एक एंटेना, यहाँ पे एक एंटेना होगा। These are box shaped antennas, square shaped antennas. They are mounted flush on the aircraft's surface. Again, I want you to go through A320, Google A320 radio altimeter antenna. So it is a very simple straight box kind of a thing which is mounted on the flush on the fuselage. हम्म। है ना? मिल गया?
टोटल 4 दिखा रहे टोटल हैं। 4 दिखा रहे हैं. Why? Because you have 2 for RA1, you have 2 for RA2. हम्म। You can also look up VHF2 antennas. VHF VHF2 antenna. गूगल करो, व्हाइट कलर का ऐसे आपको एक विप टाइप का दिखेगा. दिस इज नोन एज अ विप शेप्ड एंटेना. मिल गया? हाँ जी। शो मी. ये वाला। हाँ, कोई ऐसा इमेज है जो उसमें आपको A320 में लगा हुआ दिखा है? नहीं, ऐसा ही मैं जा नहीं रहा है। खाली एंटीना या फिर पूरे जो जो आप ये दिखा रहे हो ना, A320 ये it सेम is आ रहा A320 VHF antenna. है। ये डाला हुआ है मैंने, पर स्पेसिफिकली वो नहीं दिखा रहा है एयरक्राफ्ट पे लगा हुआ, अलग से तो दिखा रहा है ये। On fuselage. On fuselage. See this. ये आपको एंटेना दिख रहा है? This is your VHF2 antenna. Okay? ये देखिए. This is your VHF2 antenna. Okay? This is your ऊपर देख रहे हैं छोटू सा निकला हुआ, हल्का सा धुंधला है, बहुत धुंधला है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। VHF1 एंटेना. सी इसमें बहुत क्लियरली विजिबल है. ये आपका हाँ। VHF3 एंटेना, पीछे सैटकॉम. कोई डाउट? नहीं नहीं। So that's about it. That's about your antennas. You have also physically seen the antennas which are there in your aircraft. Now, how much width of the runway do you need to turn? 24 meters. Again, basic information. Nothing really, it won't really help you anywhere in flying as well. बस एक वो होता है कि यार हाँ मेरे पास कितना विड्थ है तो मैं एक 180 डिग्री टर्न ले सकता हूँ मेरे पास. आप 30 मीटर्स का तो आपको नॉमिनल रनवे विड्थ रहता ही है. टैक्सी वेज भी आप 30 मीटर्स आपको चाहिए ही चाहिए. ठीक है, आपका विंग स्पैन कितना है? इट्स अराउंड 37 मीटर्स. हाउ मच इज योर विंग स्पैन? अराउंड 37 मीटर्स. कैन यू कन्वर्ट दिस फीट इनटू मीटर्स? 111 फीट या 117 फीट को अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आता है? 117 डिवाइडेड बाय 3.28 करिए. थर्टी 35.6. 35.6 which is 36 meters, right? So 36 meters का तो आपका अकेला विंग स्पैन ही है. Okay, now let's come to tail strike clearance. Open your FCOMs, you'll see a graph. You'll see this kind of a graph. ऐसा टाइप का ग्राफ रहेगा. लैंडिंग ज्योमेट्री या टेल क्लियरेंस ऐसा करके कुछ डायग्राम है. ग्राउंड क्लियरेंस डायग्राम तो आ रहा है। क्लियरेंस डायग्राम, यस. हाँ, ये आ रहा है। Show me, let me see if you have the same chart which I'm referring to. एक तो ग्राफ आ रहा है बन के। Yes, yes, exactly that graph. In that graph, can you tell me what is there on the x-axis and on the y-axis? What is there on the y-axis, vertical axis? इसमें एक्स एक्सिस तो है ही नहीं। Y-axis क्या है? ये वो डायग्राम है ही नहीं। एक सेकंड में दूसरे पे जा रहा हूँ। Have a look at this diagram. So on the x-axis, you have the body roll angle. On the y-axis, you have body pitch up angle. ठीक है? So let us understand what is point this. अगर तुमने रोल 0 है मतलब तुम्हारा विंग्स लेवल है तो तुम्हारी पिच में कितनी क्लियरेंस है? अगर तुम पिच अप करोगे तो 13.5 पे जाकर तुम्हारा टेल टच होगा. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा देखो, अगेन तुम्हारा विंग्स लेवल है, कहां पर जाके तुम्हारा टेल टच होगा? 11.7 डिग्रीज पे जाके टेल टच. तो दो जगह टेल टच कैसे हो सकता है? देखो, दो अलग अलग चीजों के लिए डायग्राम.
शॉक एब्जॉर्बर फुल्ली एक्सटेंडेड, शॉक एब्जॉर्बर फुल्ली कंप्रेस्ड। सो जो एक्सटेंडेड है, अगर तुम्हारा एक्सटेंडेड है शॉक एब्जॉर्बर, मतलब लैंडिंग के टाइम पे तुम्हारा टेल स्ट्राइक कितने पिच पे होगी? 13.5 के पिच पे। और टेक ऑफ के टाइम पे कितने पे तुम्हारा टेल स्ट्राइक होगा? 11.7 डिग्रीज पे तुम्हारा टेल स्ट्राइक। हाँ, अब अगर तुम रोल कर देते हो एयरक्राफ्ट को अराउंड 6.3 डिग्रीज, तो तुम्हारा पिच में क्लियरेंस बढ़ जाता है। सिमिलरली थोड़ा और रोल करोगे तो तुम अगेन, ये पूरी ज्योमेट्री दी गई है कि यार तुम इस बैंक पे हो, तुम्हारे पास टेल स्ट्राइक की कितनी क्लियरेंस है। ये समझा नहीं मैं, बैंक कैसे, ग्राउंड पे कैसे बैंक होगा? लैंडिंग करने आ रहे हो, जरूरी तो है ना कि तुम्हारे विंग्स अच्छा, भी रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बैक लैंडिंग बैक रहेगी। एज वेल ना, एक एक लैंडिंग के पहले टच डाउन हो सकता है, फिर दूसरा टच डाउन हो सकता है। सो यू कैन हैव एन ऑफसेट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं समझे? समझ रहा हूँ मैं। सो लेट मी वन सेकेंड। नाउ दिस इज योर एयरक्राफ्ट। ये कह रहा है कि जब तुम लैंड करने आ रहे हो तो तुम्हारी टेल कितने पिच पे स्ट्राइक होगी? 13.5 पे स्ट्राइक होगी। और जब तुम टेक ऑफ कर रहे हो 11.7 पे स्ट्राइक। नाउ लेट्स से तुम लैंड करने आ रहे हो, गस्टी कंडीशन है, तुम्हारा एयरक्राफ्ट 6 डिग्री के रोल में, तब तुम्हारी टेल स्ट्राइक कब होगी? 16 डिग्रीज पे। 16 डिग्रीज पे, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। दिस ओके। these values। नाउ लेट्स गो। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रोल 14 डिग्री 14.8 करोगे तब जाके तुम्हारा 14.5 पे जाके टेल टच होगा। इतने रोल पे इतना पिच करोगे तो जाके तुम्हारा टेल टच होगा। 14.8 के रोल पे 14.5 का तुम पिच अप करोगे तब जाके तुम्हारा टेल टच हो। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, रोल अगर तुमने 20 डिग्रीज कर दिया, मतलब इफ आई पुट अ 20 डिग्री बैंक, मेरा विंग टच हो, चाहे मैं पिच करूं या ना करूं। मतलब मेरा पिच एंगल 0 पे है, लेकिन मैंने रोल 20 डिग्रीज कर दिया, माई विंग विल टच द ग्राउंड। इफ नॉट द विंग, माई इंजन विल टच द ग्राउंड। ओके। लाइकवाइज इफ योर लैंडिंग गियर का शॉक एब्जॉर्बर इज डाउन, if your landing gear ka shock absorber is down or it's compressed, then in that case the fuselage, the engines or the wingtip will touch the ground at 16 degrees of bank. That is what this diagram is trying to tell you. ओके, ये वाला जो डायग्राम आप मेरे को दिखा रहे हो ना, ये इसमें नहीं आ रहा मेरे में। कैसे नहीं आ रहा? एक सेकंड। मतलब So as per last class, as promised to you, I told you that I will start from this point onwards, right? Till last day what did we study? We studied the ground clearance diagram from the FCOM, correct? We studied the ground clearance diagram from the FCOM. I hope you don't have any doubts from that. नहीं नहीं। अब अगर आप FCOM के जनरल वाले सेक्शन में जाएंगे, so you will be able to see these many sub topics. Level 4 headers, ground geometry is a level 4 header. हाँ या ना? ग्राउंड ज्योमेट्री मिल गए? हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड में खोल लेता हूँ। Okay, open it. So under FCOM, go to visual ground geometry. What does that visual ground geometry tell you? That visual ground geometry tells you where is the pilot's eye. The pilot's eye is basically 15 feet above the ग्राउंड। and यहाँ से जो तुम्हारा नोज है, जो तुम्हारा ग्लेयर शील्ड है, उसके नीचे का तो तुम कुछ देख नहीं पाओगे। सो ये जो ग्लेयर शील्ड है, जो पायलट के आई पे, जो तो आप दो बॉल्स को देख के आप अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है, ठीक है? पायलट अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है। नाउ ये हॉरिजॉन्टल है एंड ये दिस इज द लास्ट लाइन एट विच ही कैन सी दिस एंगल दैट इट मेक्स फ्रॉम द होराइजन इज 20 degrees. Because this is 20 degrees, you know how much of the distance in front you cannot see? 41 feet you cannot see. That is equivalent to 12 and a half meters.
दैट इज ठीक है। 12.5 मीटर्स, 41 फीट, मतलब पूरी एक रनवे सेंटर लाइन से भी ज्यादा का डिस्टेंस। मतलब रनवे सेंटर लाइन तुम्हारे नोज के सामने होगी लेकिन दिखेगी नहीं। हमें 41 मीटर्स 12.5 मीटर के आगे का दिखेगा। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। So pilot sits 15 feet above, cutoff angle is 20 degrees, cutoff distance is 41 feet. These are the only 2, 3, 4 things that you need to study from a अच्छा, इसमें कोई नोज व्हील कैमरा वैमरा नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, एमिरेट्स नहीं में होता ही है। होता। अच्छा। वो सब एमिरेट्स के वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स में होता हाँ, अब इसमें नहीं होता आपके 777 वगैरह में, इनमें भी नहीं है। हाँ होता क्या? उनमें होता होगा, वही अच्छा, ना वाइड बॉडी में होता होगा, इन सब में नहीं। ठीक है। ठीक है, वो तो फिर रडर के ऊपर भी रहता है, विंग में हम्म। भी रहता है ना। वो तो बेसिकली इन्होंने पैसेंजर्स को भी दे रखा उसका एक्सेस। हाँ, आप इंफोटेनमेंट पे देख सकते हो, हम्म। आप इथियोपियन एयरलाइंस में भी देख सकते हो, आई थिंक सो। हाँ, दुनिया भर की है, शायद एतिहाड में भी देख सकते हो, हम्म, सिंगापुर एयरलाइंस में भी देख सकते हो। पैसा पे एक तमाशा देख, लाइक दैट। ठीक है।